Hello, you're watching my YouTube channel. I'm your host, Kamran. Today, I have invited a guest in this video, and I'm going to discuss his life, his visions, his goals, and most importantly, his faith. Hi, and welcome. We are delighted to have Assam Iftikhar here today. Sir Hassam, thank you so much for joining us today. Thank you for having me, and thank you for giving me this opportunity so that I can sort of speak and sort of guide people here. So it's a pleasure to be here. Okay, but to kick off, sir, could you please tell us what inspired you to pursue a career as head of professional qualifications and career development center, TMUC, Pakistan, and definitely perhaps share a bit about your journey leading up to your current role. Sure. I think I do want to tell the audience regarding that what pushed me towards this career. I eventually started off like initially as a finance professional in the corporate world, and I basically pursued ACCA before that. But 7 years down the line, I realized that I guess it's time to like give back to my community of accountants. Like for example, all the students that are like trying to pursue CA or ACCA. सो हमारे दौर में इट वाज लाइक उनको गाइडेंस नहीं मिलती थी, उनको कोई प्रॉपर चैनल नहीं मिलता था कि यार डूज एंड डोंट्स क्या हैं, लाइक आपने परस्यू किस तरह करना है करियर, हाउ टू परस्यू द क्वालिफिकेशन, कौन से राइट एम्प्लॉयर्स हैं जिनको आपने टारगेट करना है. सो इन ऑर्डर टू हेल्प आवर स्टूडेंट कम्युनिटी in that aspect, जिसमें हमें help नहीं मिली थी, तो that was my aim and that was my goal, and I'm very thankful to the CEO, Dr. Faisal Mushtaq, who gave me this opportunity, and I landed up with TMUC, and Alhamdulillah, for the past 8 years, I'm working with them and I'm contributing. I think I'm contributing. Baki, the rest they would know better. But yes, I have this opportunity, and Alhamdulillah, I'm doing that. That's really great to know that. Sir Hassan, when did you know that you are made for this? Actually, as far as I know about you, that you are talking about the career counseling, and we have a lack of career counseling as well in this society. Rather than we are spending our life in 2024 and we are actually on a enter in 2025, inshallah. But is a lack of. We have a lot of institutions, we have a lot of colleges, we have a lot of universities, top universities, but there is a lack of career when we talk about career counseling. If a person who graduated from the university, if a person who got certificate from any organization or any institution, but he or she actually doesn't know what to do in the future. Yeah. So actually, I'll get back to your first question. That when did I realize that? That's when, like 7 years down the lane, I realized that finance is not my game, and that was due to the like I won't say poor career counseling, but the zero career counseling that I did not get when I was a student. Yeah. So like imagine a person like pursuing an accountancy qualification and then working 7 years in the corporate and then realizing, oh, it's not my game. Mm-hmm. And then I said, yeah, and then I realized communication is basically my game. Mm-hmm. So that was before, because of the lack of career counseling, that I had to switch my field after 7 years. I'm also a victim of that. When I was I didn't get any opportunity. I didn't know what to do in the life. I just done matriculation, then I go to commerce, then I have done inter in commerce, then I have done graduation in commerce, then I've done a BA with journalism because I wanted to do mass communication, and it is actually the necessary part for that because I wanted to become an anchor, and I did. But the thing is, if someone like you was in my life, he can guide me that you have this quality, you have this potential. So you have to do that because you have an extrovert personality as well, right? But in this scenario, when I have studied, I have completed my studies, there is the same. There is no change at all. So when I have reviewed your profile, so this is actually the main reason to invite you for this interview, that people will reach you, people will reach you on social media that they are facing the same kind of problem. Sorry, sir. Actually, I'm speaking too much because I am the anchor. So, for myself. I agree. I agree with you completely, and I sort of wished the same, that I had someone like a good career counselor who could have guided me like towards the proper career. But eventually, alhamdulillah, whatever I'm doing, I'm like loving it. I'm loving my job, and I'm like sort of thankful to the CEO that he provided me this opportunity. But the thing is that if I had like proper career counseling at the beginning of my student life, so things would have been different. But still, alhamdulillah, I'm happy with my life. All right. So, how do you determine which professional qualification and certifications are most relevant for students and professionals in Pakistan? I mean, what criteria do you use to select and promote these qualifications?
Actually, I have a set of principles that I follow. Like, for example, if I have a certain student who's like sort of confused, okay, he's like, I don't know what to do actually, and he comes and I start talking to him like a friend. कि यार अच्छा interests क्या हैं? Numbers की game आपकी up है या you're good with critical thinking, critical analysis या आपको let's say theory में interest है. So I basically analyze the student first. I like sort of chalk down their positives and negatives and their strong points and their weak points, and then I suggest. I don't like sort of impose something on them. कि यार हाँ ना यही करना है आपने. I suggest कि हाँ यार this can be a good qualification based on your basically pros and cons and your strong points and your weak. SWOT analysis का आपको पता होगा. Basically मैं SWOT analysis करता हूँ स्टूडेंट का और मैं यही देखता हूँ कि strengths क्या है, weaknesses क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकती हैं, क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं किसी क्वालिफिकेशन के, एंड देन आई सॉर्ट ऑफ सजेस्ट दैट क्वालिफिकेशन टू देम, एंड इफ दे अग्री टू दैट एंड देन आई गाइड देम फर्दर. अदरवाइज मेरा हियरिंग का पार्ट ज्यादा होता है. आई लिसन टू देयर साइड द स्टोरी लाइक एट द मैक्स बिकॉज दैट अगेन दैट्स समथिंग हमारा किसी ने सुना नहीं, हमें बता दिया. आपको भी पता होगा कि मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी फारिग है, हालांकि इस तरह की बात नहीं है मेरे हिसाब से. सो मैं डिटर्मिन ये करता हूँ कि उसकी क्या विश है, उसकी क्या विल है, वो करना क्या चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है उसके, एंड देन फॉर मी एनी क्वालिफिकेशन इज अ गुड क्वालिफिकेशन एज लॉन्ग एज यू परस्यू इट लाइक द राइट वे or the proper way and you give your 200%. That's like something what I believe. Actually, we just know that he has a fever and he has to take this medicine, but we don't Yeah, address that why he has a fever. exactly, very right, very right. Exactly. So, do you think that do you ever feel that in this coming scenario, in this coming future, so the things will change? Change in what sense? Like career path की बात कर रहे Yeah, career counseling and career institutions, they'll play their role effectively in the society. हैं? Well, I think देखें career counseling is something that's there to stay. मतलब करियर काउंसलिंग आपकी कभी खत्म नहीं होगी. देखिए गाइडेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, चाहे वो आप अपने एल्डर्स से ले रहे हैं, करियर काउंसलर्स से ले रहे हैं, टीचर्स से ले रहे हैं, फैकल्टी से ले रहे हैं. सो दे आर देयर टू गाइड यू, दे विल बी देयर टू गाइड यू. बट द थिंग इज के आपकी जो चेंजेस हैं मार्केट में उसको कौन कोप अप रखता है, कौन सा करियर काउंसलर कोप अप रखेगा उसको. देखें करियर काउंसलर इज समवन जिसको अगर वो चेंज इन मार्केट ट्रेंड्स को कोप अप नहीं करेगा, उसको अपने माइंडसेट में नहीं रखेगा. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एआई की अगर बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, like if we like go back 10 years, आप अगर हम जाते हैं तो AI was nowhere to be found. या eventually अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो इतना नहीं था, क्या कहते हैं उसको, what do you call that, And इतना पॉपुलर नहीं था पाकिस्तान में या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. बट नाउ पाकिस्तान में हर कोई एआई की बात कर रहा है. yeah. सो आई थिंक करियर काउंसलिंग इज देयर टू स्टे. नंबर वन, करियर काउंसलिंग का हमेशा से इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा और रहा है भी. वो अलग बात है कुछ अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स उनको नहीं मिली ये फैसिलिटी या ये असिस्टेंस, बट आई थिंक करियर काउंसलिंग इज देयर टू स्टे क्योंकि डायरेक्शन आपको हमेशा चाहिए होती है कि राइट पाथ पे कैसे जाना है, किस उस जगह पे जाना है, किस तरीके से अप्रोच करनी है चीज, और इवेंचुअली एक राइट ट्रैक पे लैंड अप किस तरह करना है. सो करियर काउंसलिंग इज देयर टू स्टे, कहीं भी नहीं जा रहा. And definitely we need a mentor as well in the life, but a True, lot of true. people don't know that they have a mentor in the life. Even Yeah. though I'm looking नहीं, for I still like sort of get I would say mentored by my current CEO, Dr. Faisal Mushtaq. I always ask him for his help. He is always there to guide me, and he is always telling us the right track. यार ये ठीक चीज है, इसको यूं कर लो. And frankly, I've worked with like 6 CEOs till now, and he is the first one. वही वही वाली बात है ना कि आपको कभी कभी लक में मिल जाता है एक ऐसा बंदा जो आपको गाइड करता है. एंड ही इज द ओनली वन जो मुझे अभी भी, बीइंग द सीईओ, बीइंग द बिग मैन दैट ही इज, वो साथ बैठ के सिखाते हैं कि यार इस तरह कर लो, इस तरह कर लो. सो ही इज माय मेंटर, आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम, और मैं फिर बच्चों को सिखा रहा हूँ. सिंपल एज दैट. now I can say that I'm lucky as well because I have you. या All right, let's move on, sir. Can you describe the श्योर. most successful career development program you have implemented at TMUC, and what were the key factors that contributed to its success? आई थिंक देखें, आई वुड से मैंने जितने भी कॉलेजेस देखे हैं, ठीक है करियर डेवलपमेंट सेंटर हर तकरीबन मोस्टली कॉलेजेस ने आजकल लगाया हुआ है, लेकिन देखें उसमें द मेन थिंग इज नंबर वन कि आप स्टूडेंट को कितनी कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं और आप स्टूडेंट थे, हमें कंपनीज के पास जाना पड़ता था अपनी सीवीज देने के लिए, या उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि यार हमारी सीवीज एटलीस्ट कंसिडर कर लें या अपने डेटाबेस में ऐड कर लें.
So I've reversed this psychology. I request the companies to like sort of participate in job fairs जो हमारे campus में होते हैं. So it's the other way around. Camp students को नहीं जाना पड़ता. Camp जो companies हैं वो हमारे campus में आते हैं. Number one. This is known as industry academia linkage, which is, I think, which I believe is very important for a student and for the institute both. Number one. नंबर टू देखें करियर डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि आप एक स्टूडेंट को एक मार्केट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सॉफ्ट स्किल्स. मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद माय जॉब इंटरव्यूज, मुझे एक एम्प्लॉयर, आई वोंट नेम द एम्प्लॉयर, उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है. मैंने कहा जी बिल्कुल, बिकॉज आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक द जॉब. उन्होंने कहा जी शीट खोल के दिखाएं. मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया. अब उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मुझे सॉफ्ट स्किल्स पे कोई काम मैंने नहीं किया हुआ था. मुझे लगता था बस आपने पढ़ाई कर लिया, दैट्स इट, आप इंटरव्यू देंगे नौकरी मिल जाएगी. नो, दिस इज नॉट द complete picture of landing up a job. You need to have a certain department in your, I would say, a university or a college or a school maybe, जो आपको ये सब कुछ सिखाए कि यार आपने अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम किस तरह करना है, इंटरव्यू किस तरह देना है, प्रॉपर्ली ड्रेसअप किस तरह होना है. आप जीन्स में जाके इंटरव्यू नहीं दे सकते. यू हैव टू ड्रेस अप फॉर्मली. दिस इज द वेरी बेसिक पेट रूल जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. तो ये मैं बच्चों को सिखाता हूँ. ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है तो मैं उनको सिखाता हूँ. सेकेंडली आई गॉट टू नो इन माई एक्सपीरियंस के आप जब कंपनी के दरवाजे पे जाते हैं या किसी इंटरव्यू के रूम के अंदर जाते हैं, सो यू हैव टू आस्क बिफोर कमिंग इनटू दैट. आप एकदम धड़ल्ले से अंदर नहीं आ जाते. दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन. तो वो भी बच्चों को मतलब बेसिक निटी ग्रिटीज हम बच्चों को सिखाते हैं कि यार जो डूज एंड डोंट्स है ओपन इंटरव्यू पे, सीवी किस तरह बनानी है, उसमें क्या चीज आपका एक्स्ट्रा है, क्या चीज आपकी इररिलेवेंट है, वो बताना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी केपीएमजी में मेरे स्टूडेंट्स अभी एनरोल हुए हैं, प्लेस हुए हैं फॉर इंटर्नशिप्स. So I sat with them, I had a demo interview with them, and then I saw their resume, and then I told them changes. कि यार KPMG आपको ये changes expect करेगा. And Alhamdulillah, they've landed up their internships at KPMG. That's one of the big four accounting firms in Pakistan. So हम इन सब nitty-gritties पे काम करते हैं और उनकी placements पे काम करते हैं. That's totally understandable you're talking about, and I agree with this because I've suffered a lot in my life, and I got to know right now that there can be a lot of things. You have to check your CV, you have to check your dressing, you have to check the skill that what they require Yes. from your side. And you said that Agreed. I got rejected from 2 times, 3 times from there. They just need a reference, they just need a big call, and we are not aware that Yeah. we have to work on our skill that we are Yeah. lacking. Right, sir? Agreed. Okay, great. How do you foster partnership with industry leaders and organizations to enhance the professional qualifications and career development opportunities offered by TMUC? Okay, I think fostering I would say, a relationship with an employer is very important for an educational institute, I would say. Like, for example, देखें आप उनसे constant touch में रहें, आप उनसे networking activities में include करें, आप उनको अपने campus में बुलाएं, आप उनको sessions में बुलाएं, आप उनको वो importance दें जो वो deserve करते हैं actually. क्योंकि देखें, they're the ones who are going to be who will be basically providing opportunities to your student. That's what I believe, and hands down यही एक fact है. तो देखें, एक तो आपका एक पर्सनल एजेंडा तो है ही है, आपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना ही है. सेकेंडली देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान टू हैव कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप टीएमयूसी की बात करें तो वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद जाज, विद एसएनपी ग्लोबल, विद लेट्स से फ्यूचर कनेक्ट, विद लेट्स से there's another thing called B&W accountants. तो उनके साथ हम foster किस तरह, ACCA Pakistan is a big stakeholder for us. So हम उसके साथ opportunities अपनी capitalize करते हैं. Networking events पे उनको भी बुलाते हैं, हम भी उसको visit करते हैं. हमारे students constantly interact करते हैं उनके साथ, constantly network करते हैं, constantly उनके साथ in touch रहते हैं. उनके जितने भी events होते हैं, हमारे students उनके पास जाके उनको help out करते हैं. So it's a two-way thing, it's a two-way journey. आपको भी अपनी जो है basically networking की game up करनी होती है, और एम्प्लॉयर जितना आपको जो है ना अकोमोडेट करेगा तो उतना ही आपके लिए भी है. और यस, आई थिंक रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है. सो इट्स अ टू वे थिंग. या It makes sense actually. All या right. In what ways have you adapted the offerings of the Career Development Center to align with the changing demands of the job market in Pakistan? देखिए, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, फॉर एग्जांपल देखें, पहली तो बात ये है कि यू हैव टू कीप अ चेक ऑन द मार्केट के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में रिमोट वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ गया, आपको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा. देखिए, रिमोट वर्क के लिए स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार इफ अगर हम रिमोट वर्क कर रहे हैं तो वी कैन बी इन एनी एम्बियंस, वी कैन बी इन एनी लाइक सपोज ए टायर, एंड वी कैन वर्क फ्रॉम आवर द कंफर्ट ऑफ आवर होम. दैट्स नॉट द केस.
सो एक ये रिक्वायरमेंट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चों को हम ये भी सिखाते हैं कि इवन इफ यू लैंड अप अ रिमोट जॉब, यू स्टिल हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ कैरी अ प्रोफेशनल अटायर. That's the number one thing that we like sort of tell them. क्योंकि आप ये नहीं कर सकते आप शॉर्ट्स में बैठ के जॉब कर रहे हैं. So that totally depicts, I would say, a non-professional aura for anyone who's working from the comfort of their home. Secondly, देखें आपकी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एम्प्लॉयर क्या मांगता है आपसे. एम्प्लॉयर आजकल कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि वो किसी भी, अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट को एम्प्लॉय करेगा या मुझे और आपको किसी को भी जॉब मिलती है, सो यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग देम इन द मार्केट. ठीक है. सो यू नीड टू sort of foster your students, or you need to sort of prepare them for the market so that they can be your brand ambassadors. कोई उनको बोल सके कि यार टीएमयूसी का बच्चा पढ़ा हुआ है या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो. thirdly, देखें एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है, देखें हर एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है कि कॉस्ट कम से कम लगे और बेटर से बेटर रिसोर्स आ जाए उनके लिए. सो व्हाट आई फोस्टर बेसिकली, व्हाट आई बेसिकली आई वुड से, एक बीज बोता हूँ अपने स्टूडेंट्स के माइंड में कि आप ये मत समझना कि जब आप अपनी क्वालिफिकेशन कर लेंगे तो आप सीधा ही 3-4 लाख रुपए की नौकरी लैंड करेंगे. मैं उनको एक लाइन बोलता हूँ जो मुझे मेरे मेंटोर्स ने और मेरे फादर ने स्पेसिफिकली सिखाई थी कि यू ऑलवेज क्लाइंब द लैडर फ्रॉम द बॉटम. ठीक है जी, आप हमेशा सीढ़ी नीचे से चढ़ते हैं, आप कभी ऊपर से नीचे नहीं आते. आप अगर फोर्सेस की भी एग्जांपल लेते हैं तो सीधा लेफ्टिनेंट आप आते हैं, सीधा जनरल नहीं आते आप. सो दैट्स व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स कि मेहनत करनी है, आपने नीचे से स्टार्ट करना है. यही एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और वो आपको बिल्कुल ब्लैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता. आप यू हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ ग्रूम योरसेल्फ, और ये रिक्वायरमेंट है मार्केट की, रिक्वायरमेंट मार्केट ये मांगती है आपसे. एंड यस, पेशेंस, पेशेंस एम्प्लॉयर मांगता है. और अपने स्टूडेंट, हमारे जो आजकल की यंग जनरेशन, जनरेशन जी या मिलेनियल्स जिसको आप कहते हैं, पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है उनके अंदर. सो आपको ये भी ग्रूम करना पड़ता है. तो चेंजिंग ट्रेंड्स ये है कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं मार्केट की, आपकी चेंजेस के हिसाब से, सो हम उसके हिसाब से उनको ग्रूम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अच्छा कर रहे हैं मार्केट में. We are actually looking for shortcuts in this society, in this area. एग्जैक्टली, वेरी राइटली पुट. आपने एक वर्ड में इतना जबरदस्त पुट कर दिया ना उसको कि मैं क्या बताऊं आपको. All right. Like, what strategies do you use to engage both current students and alumni in the program offered by the Career Development Center? And how do you measure the effectiveness of these engagements efforts? देखिए, दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स अभी आपने मेंशन कर दिए हैं कि लुमिनाइज हैं और एक हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं, और हम दो टाइप की प्लेसमेंट्स को डील करते हैं. एक प्रॉपर जॉब्स जो होती है, जो हमारे लुमिनाइज जॉब सर्च कर रहे होते हैं. सेकेंडली इंटर्नशिप्स होती हैं, जो कि हमारे करंट स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं हमारे पास, लेकिन वो 3 मंथ्स का गैप आता है समर्स में या विंटर्स में, तो दे हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ यूटिलाइज दैट इफेक्टिवली. सो व्हाट आई डू इज दैट मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ कि जो हमारे एलुमनाइज है मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ, या मेरा जो भी एलुमनाई डिपार्टमेंट है वो भी कांटेक्ट में रहता है. और इफ दे बेसिकली आर लुकिंग अप फॉर अ जॉब, एंड इवन इफ दे आर नॉट, वी कॉन्स्टेंटली अपडेट देम कि यार ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, आप अप्लाई कर लो, ये कंपनी इस चीज के लिए हायर कर रही है. रेलेवेंट रोल हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एसीसीए का स्टूडेंट है, तो अकाउंटेंसी की कोई भी जॉब होगी, फाइनेंस की कोई भी जॉब होगी, तो हम उनको एक बेसिक, वो पॉपअप्स नहीं होते, आप उनको जो एक बेसिकली रिमाइंडर्स दे रहे होते हैं कि यार ये जॉब आ रही है, अप्लाई कर दो. ये एलुमनाई के लिए होता है, और वो राउंड द ईयर चल रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एलुमनाइज राउंड द ईयर दे वुड बी लुकिंग अप फॉर जॉब्स, या कोई इंप्रूवमेंट्स को देख रहे होंगे. सो वी नेवर लीव देम लाइक के अब आपने कर लिया दैट्स इट, यू गुड टू गो. वी ऑलवेज आर विद देम, कनेक्टेड विद देम, एंड वी हेल्प देम. बट इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए समर में काम जल्दी स्टार्ट होता है, और बेसिकली क्योंकि उनके पास समर का टाइम होता है जिसमें वो काम कर सकते हैं. सो वी, हमारे पास कंपनीज आती हैं समर्स में, और वो समर प्लेसमेंट्स लेती हैं. सो वी कॉन्स्टेंटली पॉप देम अप एज वेल कि यार आप आ जाओ और अपने सीवीज हमें जमा कराओ. फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो पहले मैंने आपको बताया था. सीवी इवैल्यूएशन होती है, डेमो इंटरव्यूज होते हैं, फिर हम उनको फिल्टर आउट करके भेजते हैं. सो यस, और इसका, हाँ, आप, अब आपने पूछा था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आप उसको मेजर किस तरह करते हैं कि कितनी इफेक्टिवनेस है. देखें, सिंपल सी गेम है. आपकी जितनी प्लेसमेंट्स ज्यादा होंगी मार्केट में, उतना ही मेरा सक्सेस रेशो होगा या हमारे डिपार्टमेंट का सक्सेस रेशो होगा. फॉर एग्जांपल, हमारा टीएमयूसी इस्लामाबाद की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, समर्स में 400 प्लेसमेंट्स हमारी होती हैं. सो फॉर मी दैट्स अ बिग नंबर, एंड दैट इज माय मेजर ऑफ सक्सेस फॉर द सीडीसी डिपार्टमेंट. So that is how I basically analyze. And secondly, yes, student feedback. If they're happy at a certain employer, क्योंकि सिर्फ प्लेसमेंट नहीं होता, क्या बच्चा खुश है या नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ दे आर हैप्पी एट अ सर्टेन एम्प्लॉयर, और वो आपको पता चल जाता है जब आपको एक, वो कहते हैं ना, मेरे लिए वो कहते हैं ना कि सबसे खुशी का मौका वो होता है जब एक स्टूडेंट ही टेक्स्ट मी के सर थैंक यू वेरी मच, यू हेल्प मी अ लॉट, आई एम एट दिस एम्प्लॉयर, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड योर हार्ड वर्क एंड योर गाइडेंस. सो दैट्स समथिंग जो मेरे ना, वो कहते हैं ना, पैसे वसूल हो गए हैं भाई.
This is actually the good thing. Everyone needs a motivation, and it is your motivation. If someone texts you that he has become successful, he has joined that office, so this is actually your motivation. Okay, so what do you do for fun? For fun? For fun, actually, I'm a car lover. मुझे गाड़ियों से बहुत शौक है, बहुत प्यार है, I would say. So गाड़ी की modification वगैरह भी चल रही होती है, उसकी maintenance भी चल रही होती है. म्यूजिक का बहुत शौक है मुझे. एक जमाने में गाता भी था, अब छोड़ दिया, बूढ़े हो गए अब जरा. और बाकी आजकल फिटनेस पे जरा मेरा कहते हैं ना, what do you call that, ध्यान ज्यादा. I work out in the gym for like 3 hours a day. Sorry, pardon? 804. सॉरी, आपकी आवाज कट रही है. क्या क्या? कैदी नंबर 804, फिटनेस लवर. एग्जैक्टली. उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, तो बस हमने कहा कि चलो यार हम भी कर लेते हैं. सो यार ये भी चल रहा है. फिटनेस है, गाड़ियां हैं, म्यूजिक है. That's it. You are working in Islamabad. You have any office in Lahore as well, or anything? जी, we have like around 8 offices, like 8 campuses nationwide. We have in Islamabad, Lahore, Rawalpindi, Gujranwala, Karachi, Peshawar, Ahmedabad. Yeah. Okay, where is the location in Lahore of your office? If I want to visit that and I want to do make something, so can Sure. Defense में है ये. Defense Raya वाला जो defense है. I believe that's Defense Phase 6, if I'm not wrong. All right. जी. वहाँ पे आप बल्कि आपने कभी जाना हो तो do let me know. मैं लाहौर आता रहता हूँ, तो I'll take you there. इंशाल्लाह आपको visit करवाएंगे. Sure. And what are your long-term goals for the Professional Qualification and Career Development Center at TMUC? Any long-term? देखिए जी, my लॉन्ग टर्म गोल्स देखें, अगर आप करियर वाइज बोलते हैं या इस करियर डेवलपमेंट या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, सो आई वांट टू हेल्प एज मेनी स्टूडेंट्स एज आई कैन. लाइक मैं जितने स्टूडेंट्स की ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, दैट वुड बी माय गोल फॉर द फ्यूचर. के मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, उनकी मदद होगी, वो ग्रूम होंगे, वो मार्केट में जाएंगे, I will be the happiest guy alive. Secondly, I want the professional qualifications at TMUC to grow. Like ACCA qualification है अगर यहाँ पे, so I want कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा students आए, because it's a lovely qualification. It's a very flexible qualification. और लोगों के जो misconceptions regarding this qualification के मुश्किल है, पास नहीं होता, so वो मैंने misconceptions बहुत हद तक दूर कर भी चुका हूँ, और उसको मैंने खत्म करना भी है. और अगर आप मेरा पर्सनल फ्यूचर गोल पूछना चाह रहे हैं, जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा, so मेरा पर्सनल फ्यूचर गोल यही है कि I would like to contribute for the betterment of my country as much as I can through any medium possible, whether it's through helping my youth, my community, my students, or in any possible way. So Pakistan is something that I love as a country. It's my country. I feel proud by calling myself as a Pakistani. आप किंग्स की तरह रहते हैं अपने मुल्क में, और मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान ग्रो करे, और अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसके लिए, तो I'll be the happiest guy alive. No one makes goal like you. So goal setting matters a lot in the life. So I never make goals. So definitely, it gives you a direction. It gives you a direction. Yeah. And rejection is a redirection of a life, or how should we take rejection? If I go for a job interview and I got rejected, so how should I take that? देखिए, rejection is something that I would say number one gives you a chance to rethink. ठीक है, push the restart button कि मैं किधर गलत था, मेरे क्या do's and don'ts मैंने नहीं किए, या मैं क्या चीज बेहतर कर सकता हूँ. देखें, इंसान है, रिजेक्शन होती है, कहीं से भी आप रिजेक्ट होते हैं, बंदा डिमोरलाइज होता है. दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. लेकिन कहते हैं कि कामयाब इंसान वो होता है ना, जो रिजेक्शन के बाद फिर से खड़ा हो, कि नो, आई विल गेट अप ऑन माय फीट एंड आई विल फाइट बैक अगेन. देखें, जिस कैदी नंबर 804 का अपना नाम लिया था, तो वो तो फाइट बैक ही कर रहा. ठीक है, और सबसे बेस्ट रोल मॉडल वही है हमारे लिए. लेकिन अगर आप इंडिविजुअलिटी पे बात करें, देखें, बेहतर इंसान वही होता है जो एक दफा गिरे ना, और वो वापस बाउंस बैक करे. तो कामयाब इंसान भी वही होता है. और ट्रस्ट मी, पाकिस्तान तो मैं नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया में ऐसे अगर 100% की अगर आप बात करें, तो मेरा ख्याल है 40% लोग ऐसे होंगे जो बाउंस बैक करते हैं. And that is what sets them apart. And I think if it's you or if it's me, anyone can do that. बस एक वो right आपको frame of mind चाहिए होता है उसके लिए. All right, sir. Thank you so much for joining us today. It is really You're welcome, Ji. To hear and learning from your experiences. Thank you very much, Kamran. It was a pleasure being at your show, or I would love to be again.
be a part of your show, and I think आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो I was surprised when I was reached up by you, and I was like, यार चलो अल्हम्दुलिल्लाह another platform जहाँ पे मैं और बच्चों का ना experience share कर सकता हूँ और अपना contributions बता सकता हूँ. So thank you for giving me this opportunity. Before I wrap up, is there anything you would like to share with our audience, or any message you would like to leave them with? Definitely. First of all, I would like to let the audience know that this person sitting in front of me is hitting the right spots, going through all the right areas जिस पे बात करनी चाहिए. मैं आपके honestly जब आपने reach out किया था, मैंने आपके different podcasts देखे हैं, और मैं यही देखना चाह रहा था कि आप बहुत important aspects को touch करते हो जिस पे बात नहीं होती normally, और उसके लिए आपको बहुत guts चाहिए करने के लिए. So hats off to you, Kamran. I am a big fan of yours, to be honest. So fantastic job. Secondly, मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगा. मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं बाहर और अपने मुल्क को टफ टाइम में छोड़ रहे हैं. सो देखें, कामरान भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम में नहीं छोड़ रहे हैं. आपके मुल्क को आपकी जरूरत है, आपके मुल्क को आपके टफ टाइम में जरूरत है, क्योंकि इस मुल्क ने आपको मेमोरीज दी है, इस मुल्क ने आपको कामयाबी दी है, इस मुल्क ने आपने एजुकेशन दी है, इस मुल्क ने आपको आपकी पहचान दी है. सो पाकिस्तान नीड्स यू. बाहर मत जाएं, पाकिस्तान में रहें. अच्छा टाइम भी आएगा, अच्छा टाइम देखा भी है, टफ टाइम आता है, आगे इंशाल्लाह फिर अच्छा टाइम आ जाएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट द यूथ स्पेशली एंड ऑल दोज एक्सपीरियंस पर्सनल कि पाकिस्तान में रहें, कंट्रीब्यूट करें और इसको फिर अपने पैरों पर खड़ा करें. Any specific suggestion or a message for me as well? सॉरी पार्टन, आपकी आवाज कट गई थी. Any message or any suggestion specifically for me? फॉर यू और फॉर द ऑडियंस? For me as well. You have सर, your आई वुड से कीप audience. अप द गुड वर्क. माशाल्लाह, मैं तो आपको देख के इंस्पायर हो गया हूँ, और आई वुड से यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. मतलब आप वही मैं फिर से बात दोहराऊंगा कि आप ऐसे की एरियाज को टच कर रहे हैं जिसपे बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और आई थिंक यू हैव that potential. You've taken the first step, or I would love to be a part of your show because you're doing a fantastic job. So बुलाते रहिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते रहेंगे. Inshallah, sir. I will invite you for another episode with new questions and with जरूर. you as well. Thank you so much, sir. Thank you. Safar, thank you so much again. Have a lovely day, sir. Thank you so much. Care. Thank you जी, same here. Thank you. Thank you. Love. Thank you. Love.